Hello, dear friends. A warm welcome once again to the International Fab Talks. My dear friends, happy Diwali to one and all across the world. And guess today, who's our special lamp? The lamp of hope, the lamp of courage, and the lamp of peace, and the lamp of guidance and mentorship. We have our special guest with us today, all the way from Kolkata. He is Mr. Choudhury. Let's get to know more about our special guest. First, let's invite him on the special stage. He is a lamp. We've kept his name secret. Let's get to know it directly from our guest. Dear sir, welcome to this International Fab Talk session today. Welcome and happy Diwali to all the listeners of this Fab Talk, International Fab Talk. And I have just gone through almost all of your, episodes, and it's fabulous and fantastic. We're working really hard and good for the society, and hope you for the best. Thank you, sir. Dear sir, we'd love to hear your name from you. We want that power from you to come and spread across everyone. Over to you, sir. Just share your name. Myself, RAI CHOUDHURY. I'm an advocate from Calcutta High Court. I am based in Kolkata, and I have got a law firm, which is RCA Law Firm. And I'm a founder and director of Cyber Guru. This is Eastern India's first online consultation and education center for cyber security education and consultancy. Wonderful. So that is all about me. I just work for the society, for my clients, and obviously for myself, because this is my profession. So I just try to work good for the society. That's it. Thank you, sir. Dear friends, it's now time to officially introduce our guest. Of course, sir has shared about himself, but I'd love to take the opportunity and the privilege to introduce our special celebrity today on this special day, Diwali. Let's keep the hope of, this beautiful lamp of peace and love and courage and security, because our special celebrity today focuses on security, cyber security. Let's get to know more about our guest in an official way. Dear sir, with your permission, I will go ahead and introduce you in an official way. Yes, sir. Yes, thank you. Dear friends, it's our duty to officially introduce our guest. He is Mr. Rajashri Rai. If I get Rajesh Rai. So can I get your name right, sir? RAI CHOUDHURY. Yes, Rajashri Rai Choudhury. He's an advocate from West Bengal, Calcutta, High Court, Calcutta, a cyber lawyer. We have to really be very, alert. If you find any case where you're stuck up in online, any transaction or anything you have faced, some type of cyber bullying, etc., you can connect with this special guest of ours today. He's a great speaker, a wonderful author, a proprietor of RAI CHOUDHURY and Associates, full facility law firm, and a great founder and director called a Cyber Guru, institution for cyber legal training and consultancy. Dear friends, apart from all of this, he is a visiting faculty to the Northeastern Police Academy, Meghalaya. Again, a faculty to Police Training School, Kolkata. A visiting faculty to Swami Vivekananda Police Institute, Barrackpore. And as well, visiting faculty to CID, West Bengal. A guest faculty to the Cyber and Business Laws Indo-German Chambers of Commerce. My dear friends, it is really such an honor to have such a great, person with us to share the stage, and we'll get to know more about how we could benefit from our great celebrity and how he wants to inspire the world and create a good atmosphere for all of us. And dear friends, apart from that, he is a visiting lecturer to the cyber laws, constitutional laws, and, intellectual property rights at TECHNO International Newtown, a legal advisor to the Punjab National Bank and HDFC Bank, an expert committee member, Justice Lokur and Justice Bhattacharya Commission of Inquiry for Investigation on Pegasus, and much more. To sir's list is, there are so many feathers and so many achievements, but listening to it from sir itself, directly getting to know from sir is much more better. So let's go ahead and understand his life and how his life has been an inspiration to all of us. Let's get to know. Join us, friends. Dear sir, we are so happy to meet
it's a pleasant surprise that you deal in all of these. You've been with the CID, with the Police Academy, and with the Chamber of Commerce, and all of these. For me, it's just a wow. I would like to know more about your work and how we all could benefit from your work and your experience. Dear sir, how would you define yourself? Who is the real Rai Chaudhary? Yes. Um, I'm a stupid, honest common man. So that's it. That's my only one and only introduction I can give. Uh, my work is something like dealing with some legal issues people face that maybe for some other subjects or maybe for cybersecurity issues. So people come to me, they ask for some help, and I do it within the periphery of law. So that is the only thing what I can serve the society. And I try to teach students. And actually, we cannot teach anyone. We can just guide someone that this is the way you can teach yourself. So that is the only way we can guide our students. जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ना कि एक दिशा दिखाना. So that is the only way we can guide the students. So that is the way I work. I try to work. I just want to share one thing, that the only thing that is important in life, that is honesty and consistency. If you're in any job, any profession, anything, you just have to be a consistent performer, consistent worker rather. Whether you're performing properly or not, that will be judged by others. But you have to work day in and day out. You have to think about the work, and at the time of work, you have to deliver. So that is the only thing. And at the same time, you have to keep honesty. So this is the only thing I think it is missing right now throughout the country, that this honesty factor is very difficult right now. So we have to be honest in our work. We have to be honest in dealing with people. We have to be honest that we should hear somebody. When someone comes, it is our duty to hear that person, whether those things are important for solving that person's own legal problem or not. That is a secondary issue. But the primary issue is I have to hear that person. I have to hear him or her properly, so that he or she feels that, okay, I have been heard. So that is the main issue. So whenever we go to a doctor, what we think, what we say normally, your doctor ko dekh ke mera half theek ho gaya main. So that is the main thing, that you have to be presented before your clients or before your work, whatever the work you do, you have to be presented in such a way that there is a feel good situation for the people in their heart for you. Whatever you can do or do not, whatever you can deliver, what you can do for the clients, that is a different issue. That will be dependent upon the, the legality or the, the merit of the case. But listening to a person is more important than solving somebody's problem. So we are a very less listener. We talk much and we listen less. So we have to be just opposite. We have to listen much and talk less. Perfect. I really like the way you put that. Honesty, consistency, be a great listener. And of course, you love to mentor people, to guide people, than to teach. सिखा तो नहीं सकते, लेकिन guide कर सकते हैं, राह दिखा सकते हैं. बहुत खूब, sir. Very nice. Thank you so much for giving that beautiful insight at the start itself. Introduction में ये सब दे दिए, वो बहुत अच्छा लगा. Very nice. Dear sir, अक्सर देखा गया, we have seen कि हम लोग stress बहुत हो जाते हैं. We become stressed out, we become, disturbed. So how to manage stress from your experience, from your professional background? How would you advise us to manage our stress? और आसान तरीका stress de-stress करने के लिए, could you just share sir? सबसे आसान तरीका what I follow वो है कि if you face a problem, then there can be two things. Either there is a solution to that problem, or there cannot be a solution to that problem. So these two can be the possibilities for any problem whatsoever.
So if there is a solution to that problem, try to do that solution. So there is no stress. If there is no solution for that problem, so don't even think about that problem. So the stress is over. So it is the most simplest way you can handle yourself or you can mentor yourself, that just go for concentrating on the problem solving, not on discussing about the problem. That is important. Super. Wonderful, really wonderful. Focus on the solution, not on, talking about the problem continuously. Just shift your attention on the solution, how to Right. solve the problem. Very nice. I guess that is why you are, a lawyer, and you've been taking training sessions for all of these, different people, where you've been connected with the police, the CID, and the different areas. That's really very nice. And even for the common people, because Cyber Guru basically works for the common people. So that is a very core area what I'm working on, that the situation right now in India and even in abroad, that the cyber sensitization is absolutely very, very in a bad shape. So my work is to basically sensitizing common people regarding the cyber situations, that how they can get affected, what are the vulnerability points, what are the issues by which they can get affected, and if they are sensitized enough, if they're just basic sensitization is okay, then I think 90% of our cyber crime problems are over. I'm just giving a small example. Just 2-3 days back, I have received an SMS. I think this SMS have been received by many lakhs of people in India, that, sir, your electricity connection will be disconnected, and that too in a very pathetic English. So the construction of English was very pathetic. So he was saying ki your electricity connection disconnect ho jayega. So if you don't pay or if you don't call in this number, आपका electricity is disconnect ho jayega. So as this is an essential service, then obviously people will be scared. तो सब लोग डर जाएगा ना कि मेरा इलेक्ट्रिसिटी डिस्कनेक्ट हो जाएगा, मेरा गैस का कनेक्शन बंद हो जाएगा, मेरा बैंक अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, मेरा कार्ड ब्लॉक हो जाएगा. तो फॉर दीज रीजंस पीपल गेट स्केयर्ड, एंड once they are scared, they take the advantage of this factor which is called the fear factor. Now, being a cyber lawyer or being a basic cyber, as I have got a basic cyber knowledge, I can identify that this message is a fraudster's message. This is not a real message. And the electricity office will not send a message from somebody's mobile number, right? So it will be a very official number. So when I saw a mobile number and this type of message, I can identify. My training concentrates on that part only, that you have to identify, so that you can get capable of yourself of getting identified the vulnerability points. Once you're capable of identifying the vulnerability points, you are safe from cyber crimes. So that is the only thing. Do's and don'ts, it has been told everywhere. It has been told by police, it has been told by the bank, it has been told by the newspapers, in news medias, everywhere. Do's and don'ts. ये करो, ये मत करो, ये करो, ये मत करो. आदमी भूल जाता है. At that point of time, when there is an attack, there will be no cyber guru at that point of time sitting in front of the victim. So what will be there? There will be my training. उसका दिमाग में ये ट्रेनिंग रहेगा, तो he or she can himself or herself identify, no, this what is happening is fraud. So I will not share anything with that person. That is the only factor by which we can handle cyber crimes. A robust system security will never solve this cybersecurity problem in India or anywhere in the world. Only education and sensitization will work and nothing else. Brilliant, sir. And I love the way you said it is for the common man, Aam Janta. The common man should really take the benefits of the cyber guru, the awareness sessions that sir gives. He wants to enlighten and sensitize you to use, the online space very well, to be a great digital citizen,
and to leave positive digital footprints. That's really very nice, sir. I really appreciate that a lot, that you are focusing on creating awareness, sensitizing people, making them to understand कि भाई कब क्या करना है. Right. कुछ बुरा होने से पहले अपने आप को बचा के रखिए. Stay safe in the safe zone. Wonderful. Because in the cyber situation, what is happening, that prevention, we say that prevention is better than cure. That is a very common word. But Yes. I say in cyber security, prevention is the only cure. Wonderful. Brilliant. Because if something happens with you, you are not even sure that whether police is going to help you or the bank is going to refund your money or not. This is a very gray situation. So if you are prevented from the cyber, if you are preventing the cyber crimes, that is the only security key that you have. So you have to be very cautious about your own preventions. And that can be achieved only by knowledge and nothing else. Yes. Thank you, sir, for enlightening us, for empowering us today on Diwali. This is the need of the hour for everyone out there. As you celebrate your festival, stay very safe and get connected to our special celebrity. He's there out to sensitize you, to create that positive impact in your mind. Prevention is everything online. Do not fall in the trap of online scamming or online dating apps. It could be just anything online where you have to just stay safe. Yes, dear. Dear sir, आप तो अभी हमारे लिए inspiration बन गए. You are an inspiration. The moment I read your profile, the moment I connected with you, there was a very warm connection between you. You were that person who's approachable. So you are an inspiration to many of us. तो आपके लिए inspiration कौन था? तो आप यहाँ तक आए. Who is your inspiration? I have got my father and mother, my teachers. My grandfather was a fantastic inspiration for all of us. So he was a doctor. So he said he said a very fantastic word. That is that philosophy. We all work in different fields, but every field has got its own philosophy. But he was defining the word philosophy in a different way. He said that philosophy is the science of all sciences and art of all arts. So that where we are stuck, that when somebody in some field and we get stuck by not getting some answers, and that answer can be answered by philosophy. So the philosophy of life is very important, and that is the teaching from my grandfather. So father, mother, grandfather, and all my family members are my inspirations. My teachers who have taught me from the day one, they are my inspirations. And obviously, when I work better, my senior, he was my inspiration. He is my inspiration. So we are all connected every time. Right now, I work independently, but I still connected with my seniors, and they are very much adorable persons in the world. And we just get connected for no reason, maybe not for any need, but getting connected with somebody is very important. So those are my inspirations. And in the legal field, especially for the cyber law, when a person defrauded, that person becomes my inspiration to work more harder. So the negative inspiration is also works. That if a person gets affected, that means I am not working properly. I am not being able to teach that person. That's why he is getting defrauded. So that is my inspiration, that I should teach more and more people, more and more students, more and more teachers, guardians. Everybody should be taught in this cyber field. Then only people will be safe. Thank you, sir, for sharing all of that, starting right from your grandfather to your senior. And you said everybody has been your inspiration who were with you. That's really very nice. Thanks to you for being an inspiration now. They were your inspiration. You are our inspiration. That's really very nice. I really like the way when you say sensitize them. Prevention is the only thing that you have to do when you're online. It's wonderful, sir.
Dear, so the next question, we come down from your, from the cyber crime level, we come down to that zone. When you were a little kid, how were you? Were you naughty, mischievous? I How were was you? How did you enjoy your childhood, or what were the things I that you did? enjoyed my childhood a lot because we have got playgrounds to play. I was in a school where there was two playgrounds, not even one. There were two playgrounds, and we just less in class and more in playgrounds. We just went to the school, put the bags in the class, and went to the playground right then. So the teachers come and asks us to, You just come to the class. We will see you." So those are the time we just enjoyed our childhood a lot. We played a lot. That is the most important thing. We played a lot. What that happened, that apart from the physical exercises, when you were in a team, then this peer grouping is very important. Right now we can understand that what is the necessity of being uh, I mean a player in the childhood, because you work in a team. You have your team spirit grows, so your peer grouping grows. How we Right, even in today we have gotten group of all our classmates from the very school days, and each and every one day in a year we have a group, I mean a picnic. We just join in the picnic, we just get connected with each other. Even the some person are staying abroad in other cities in the India, they will have to come on that day to join us, and they do come. And that is the beauty of the peer grouping, because if you are in a team you can work maximum. So that was my kid. That was what I was in a kid. Wonderful. I like the way you said, no, leave the bags in the classroom and more, less in the classroom, more on the playground, because it was a learning session for you all, team spirit, and connecting with your friends, have building bonds, strong bonds. That's really nice. And you connect even now. That's really very nice. So we really have, that fun when we were kids, always connecting with each other, having fun and joy. And even we have that connection with us even till now. So dear friends, we go on with the next question and connect with our special celebrity and guest. We'll ask him the next question. We'll wait for him. I think there is a technical snag. He'll be joining us back soon. We'll just be back in a moment. Hello, dear friends. Here we are back again after a short break. And yes, friends, let's go on with the next question. As we promised you, we're going to get out many answers from our celebrity today and get to learn and stay safe online. Yes, dear. Dear sir, any book that you would like to suggest for all of us? I am a very I mean very good. I'm not a very good reader of the books, because I have to read all these books behind me. So those are huge. So I get little time to read other books. But even I read Tagore. Tagore is very famous. Is very favorite to me. So Tagore's books are very good. We can get every philosophy of life from Tagore's books. So in every situation we can handle with the Tagore. So that those books are very important. Ji sir. Thank you, sir, so much for sharing. So the next question is, how should people remember you? लोग आपको क्यों याद करना है और किस बात के लिए याद करना है? That is people's problem, not mine. So हम तो काम करते रहेंगे. अब आदमी क्यों हमको याद रखेंगे, ये आदमी उनके लिए सोच उनके लिए रख देते हैं. ऐसा बोल दिया. ठीक है ठीक है. That's really nice. I thought like you would give us some suggestion, like, yeah, I'm doing this and people should remember me. Yeah, I am the cyber guru here. Not necessarily, because what I am doing maybe किसी के लिए अच्छा भी नहीं लग सकता है. बिकॉज ये मान लीजिए कि जो फ्रॉडस्टर है वो क्यों हमको याद करेंगे, बिकॉज आई एम अच्छे लोग तो करेंगे ना सर. अब देखिए,
हो सकता है, बट जो बुरे लोग हैं वो भी क्यों करेंगे हमको? जी 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 इट सर। इज माई जॉब, आई एम जस्ट डूइंग माई जॉब। अब हमको क्यों लोग याद करेंगे, वो आदमी के लिए ऊपर सोच छोड़ देते हैं। अब if I put this in my head, then it will be a point of another, I mean stress, स्ट्रेस। क्योंकि मैं ये काम करूंगा तब हमको आदमी याद रहेगा, जी रखेगा। सो हम छोड़ देते हैं इसको, चलिए जी आदमी के ऊपर छोड़ देते जी। इस दुनिया में है ना सर, ज्यादा अच्छे लोग हैं, बुरे लोग कम हैं, अच्छे लोग बहुत सारे हैं। तो अच्छे लोग आपको याद करेंगे एंड दे विल रिमेंबर यू फॉर योर अटेम्प्ट टू sensitize them on cyber crimes, to sensitize them on it and create awareness about how they should, continue with their life and stay safe online, preventing the bad. Yes हैं। sir. राइट, Yes sir. The next question, sir, is there any place you'd like to visit on a holiday? कभी छुट्टी मिलती है या नहीं, वो पहले पूछना है आपको, बिकॉज यूर एन एडवोकेट, यू आर बिजी इनटू ट्रेनिंग एंड विजिटिंग फैकल्टीज इन डिफरेंट एरियाज। मैं तो करता हूँ कभी कभी, आई हैव टू गो सम अदर सिटीज फॉर वर्क। तो मैं काम करता हूँ कि जो भी क्लाइंट या जो भी कंपनी के साथ मेरा काम रहता है, उन लोगों को बोलता हूँ कि एक दिन का ज्यादा टाइम ले लो। सपोज द एंटायर वर्क विल बी कंप्लीटेड इन 3 days, so I say कि okay, just make a ticket of returning ticket of 4 days, तो कि I get a 1 day time, so that 1 day is enough for me to roam around that city, so city or places. But if I get a vacation, I mean it's a complete vacation, then obviously I will love to travel to Kashmir. That is one of the best places I have ever visited. So I will love to visit it again and again at Kashmir. जी जी सर, थैंक यू सर फॉर शेयरिंग ऑल ऑफ दैट, थैंक यू। डियर सर, आपके अंदर यू योरसेल्फ, ये मेरा गुण है, दिस इज माय इनर कोर क्वालिटी, यू हैव अंडरस्टूड दैट दिस इज यू। व्हाट इज दैट इनर कोर क्वालिटी यू लव अबाउट योरसेल्फ? खुद को बहुत पसंद है कि ये मैं हूँ। You said honesty and consistency. Is it the same over here or something different? What is your inner core quality which you love yourself for? I don't know whether any of us who is listening has tried this exercise or not. There is a fantastic exercise. Uh, just sit on a chair, put a blank chair in front of you, and try to put yourself in that chair. I mean, आपसे आप खुद निकल गए, is another entity, and it is sitting in front of your chair, and we both are talking to each other. This is called self-realization. This is a self-realization exercise. So for the mental health issues or for any other issues, what I have done in today, आज मैं क्या किया आज का contribution क्या है मेरा? So for that, if you can make yourself sit in front of you and ask कि चलो भाई आज का दिन कैसा रहा, and how do you feel? अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है, क्या लग रहा है? Then you get answers. When you get answers, this feeling is to be generated within people. आदमी को ये सोचना चाहिए, because आप ये चीज सोचिए, आप कभी खुद से बात करने के लिए कितना टाइम बिताते हो? सो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। हम लोगों का खुद का जो एंटिटी है, ये हम लोग भूल ही जाते हैं कि हम लोगों का भी कोई एक एंटिटी है। दूसरा आदमी, जैसे कि मैं आपको देख रहा हूं, आप हमको देख रहे हैं, but when in the time in the day or night, when we see ourselves, that is a very important issue, and मैं ये चीज कर सकता हूँ, so हमको अच्छा भी लगता है ये चीज, so that can be my inner quality, that can be a better inner quality that gives me peace and happiness, कि चलो मैं तो खुद के साथ कुछ ना कुछ तो बात कर लेता हूँ। Wonderful. Self-talk, self-introspection. Yes? That is very important. Yes. Wonderful, sir. Dear sir, आपको काम से कभी कभी फुर्सत मिलती है? कभी मूवीज देखते हैं? अगर देखते हैं तो हमारे लिए देखते हैं सर? एकदम काम से मेरा फुर्सत ही फुर्सत है।
ओके जी जी। तो कोई ऐसा अच्छा मूवी नाम जो हम लोग कुछ सीख सकते हैं, कुछ सोशल मैसेज है उसमें, ऐसी वाली मूवी हमें बता दीजिए कि भाई हम कि अगर सोशल मैसेज नहीं वाला, देखे तो वी कैन वॉच इट। सोशल मैसेज वाला तो बहुत मूवीज है, मतलब देयर बंडल्स ऑफ मूवीज। सो फॉर मी, सत्यजीत राय's movies are very important. ये हमको, दो इट्स अ बंगाली मूवीज, बट इसका बहुत सारा वर्जन्स भी है। सो इफ यू कैन गो फॉर दोज वर्जन्स, तो सोनार किल्ला इज वेरी इंटरेस्टिंग मूवी। देन हीरोक राजार देशे बोल के एक मूवी है, दैट इज अ वेरी, और फॉर हिंदी आई लाइक सरफरोश। सरफरोश इज अ फैंटास्टिक मूवी। इज इट आमिर खान इन दैट सर, Yeah, सरफरोश? Amir Khan's movie. Amir Khan's movie. And then for the student life, and for Three Idiot is a very good movie. So for Tare Zameen Par, these are all based on psychotherapies and psycho issues. So ये सब movies अच्छा लगता है. But for entertainment, I like South Indian movies and I mean war movies. Those are very entertaining. वो सीखने को कम और एंटरटेनमेंट ज्यादा होता है, बट दोज आर गुड। मतलब देर इज नो काइंड ऑफ अ क्रीड इन द मूवी। हमको ऐसा नहीं है कि सिर्फ लव स्टोरीज अच्छा लगता है, कि सिर्फ वॉर स्टोरीज अच्छा लगता है, ऐसा नहीं। इट्स अ मिक्स, जब जैसा मूड हुआ देख लिया। वेब सीरीज तो अभी बहुत चलता है, और एंड आई विल सजेस्ट एवरीबडी टू वॉच टू वेब सीरीज, एटलीस्ट टू वेब सीरीज। वन इज जामतारा एंड अनदर इज असुर। So these two web series are mandatory to watch. So those are fantastic, fabulous. So these two series are very important for this cybersecurity perspective. Yes, I was just to ask you that, and you have shared it. Just I wanted to Yeah. ask you, is there anything like that? Would you like to repeat the name? One is Jamtara and the other one, sir? One is Jamtara and another is Asur. Asur. Asu. Okay, sir. Asur. Thank you, sir. Thank you very much for sharing. That's really nice. Thank you so much. Dear sir, what do you think about a lottery or a perfect job? Which one is better? अगर लॉटरी मिल जाए तो खुशी, या परफेक्ट जॉब, ऐसा कुछ है? परफेक्ट जॉब बोल के तो कुछ नहीं है, लॉटरी बोल के कुछ एक है। बट लॉटरी में क्या होता है ना, बट इट्स अ वेरी इजी मनी। आई डोंट लव इजी मनी। तो चलो काम करो, कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। And at the end of the day, it is very important that you have got a two roti and one bati of dal. That will be enough for somebody's survival. ये जो जितना जितना आदमी अभी सब बहुत सारा कुछ निकल रहा है कि कुछ ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, किसी का मतलब बिस्तर के नीचे से पैसा निकल रहा है, कि बहुत कुछ हो रहा है ना अभी। डिसऑनेस्टी इज एवरीवेयर। तो हम उन लोगों को बोलते हैं कि डिनर में 1000 प्लेट्स ऑफ बिरयानी दे दो इन लोग, देखते हैं कैसे खाते हैं। हाँ? हर एक दिन में 1000 प्लेट बिरयानी दे दो, क्योंकि उतना करोड़ों का पैसा है, तो फिर खाना तो पड़ेगा ही। तो इसके लिए 1000 प्लेट बिरयानी एक एक के लिए तो बनता ही है। तो these are a very, मतलब एब्सोल्युटली दिस इज अ लैक ऑफ एजुकेशन। हम लोगों का दो चीज है ना, कि कोई लोग ना बहुत कुछ डिग्रीज होल्ड करते हैं। सो आई से इट इज नॉट एजुकेशन, इट इज हायर लिटरेसी। ये एजुकेशन और हायर लिटरेसी में बहुत फर्क होता है। कि मैं डॉक्टरेट हो गया, मैं पोस्ट डॉक्टरेट कर लिया, मैं 4 एमए कर लिया, या 5 कुछ कर लिया, ये अलग है। बट व्हाट इज माय एजुकेशन? मैं एक दूसरा आदमी से कैसे बर्ताव करता हूँ, सोसाइटी को मैं क्या दे रहा हूँ, व्हाट इज माय कंट्रीब्यूशन टू द नेचर। हम लोग तो सोसाइटी लेके सोचते हैं, हम लोग नेचर लेके कभी नहीं सोचते। ये आज दिवाली का दिन है, आज सब लोग लाइट तो जलाएगा ही, इसके साथ पटाखा फटाएगा, बहुत कुछ धुआं निकालेगा, बहुत कुछ करेगा। इन लोगों को कोई सोच भी नहीं है कि हम लोग का घर का जो पेट्स है, उन लोगों के ऊपर क्या बीत रहा है। हम लोग का जो सोसाइटी है, हम लोग का जो आई मीन एनवायरनमेंट है, उसमें उसमें क्या बीत रहा है, क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हम सिंगल डे में।
कि आज का दिन में हम लोग क्या कंट्रीब्यूट करेंगे, कितना कार्बन डाइऑक्साइड, कितना कार्बन मोनोऑक्साइड, कितना कुछ हम लोग कंट्रीब्यूट करेंगे, और बाद में बोलेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। ये हम लोगों को सोचना पड़ेगा ना, हम लोग कर क्या रहे हैं। ये हम लोग का डेवलपमेंट इज नेसेसरी, डेवलपमेंट तो चलता ही रहेगा, यू कैनॉट स्टॉप दैट, बट इट शुड बी अ नेचर ओरिएंटेड डेवलपमेंट। नेचर के साथ जुड़ के डेवलपमेंट करो, नेचर को बात देखे नहीं। if you are not I was looking for I was just listening to a speech, somebody's speech, just in a reel. तो वो बोल रही कि शी इज अ लेडी, तो शी वाज टेलिंग कि सिर्फ ह्यूमन है, टोटल दुनिया में जितना क्रीचर है उसमें सिर्फ ह्यूमन है जो, जैसा आपका एक क्वेश्चन था ना, व्हाट वाज योर एक्सपेक्टेशन, कि आपको लोग क्यों याद करेंगे, तो शी वाज टेलिंग कि सिर्फ ह्यूमन है जो कोई एक्सपेक्टेशंस के लिए जीता है। बर्ड जब, इफ व्हेन द बर्ड सिंग्स, बर्ड सोचते हैं कि कौन उसको सुन रहा है। व्हेन अ फ्लावर ब्लॉसम्स, कोई फ्लावर सोचता है कि उसको कौन देखेगा। बट हम लोग एक गाना करेंगे तो बार बार फेसबुक में देखेंगे कि मेरा कितना लाइक आया, कितना कमेंट आया, बिकॉज वी आर लिविंग ऑन एक्सपेक्टेशंस, हम लोग का एक्सपेक्टेशन है। तो इफ वी आर नॉट, इफ वी आर गोइंग आउट ऑफ दिस एक्सपेक्टेशन फैक्टर, देन हम लोग कुछ भी करें, चलिए नेचर के साथ जुड़ के कुछ करते हैं, तो दैट विल बी गुड फॉर अस। Just 2 3 days, just 2 days back, I have received there was a Supreme Court judgment. तो सुप्रीम कोर्ट has said कि अभी लोअर कोर्ट का जितना सारा डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट आप ऑनलाइन में भी दे सकते हैं, ऑनलाइन में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। पहले क्या होता था, इतना सारा जस्ट बंडल्स एंड पाइल्स ऑफ पेपर्स, एंड each of one paper costs for a tree. We were destroying our nature for a paper, for a piece of paper. टिश्यू पेपर एक बार यूज किया, फेंक दिया उसको। हम लोग सोचते नहीं कि टिश्यू पेपर के लिए कितना सारा ट्रीज को काटा गया था। बट हम लोग ये पूरा चीज को डिजिटाइज कर दे, ये एंटायर थिंग इज डिजिटाइज्ड विद अ प्रॉपर लेवल ऑफ प्रोटेक्शन, तो फिर हम लोगों का नेचर तो बचेगा, विल सेव नेचर। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ये जो साइबर लॉ है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो है 2000 जो इंडिया में है, उसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है रिप्लेसिंग द पेपर बेस्ड मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। इसीलिए मैं बोलता हूं कि ये साइबर लॉ कम है, एनवायरमेंटल लॉ ज्यादा है, क्योंकि व्हेनेवर हम लोग पेपर बेस्ड मेथड से इलेक्ट्रॉनिक मेथड में आ जाएंगे, हम लोग का पेपर बचेगा, पेपर बचेगा मतलब ट्रीज बचेगा, ट्रीज बचेगा मतलब एनवायरमेंट बचेगा। सो इट इज मोर अ एनवायरमेंट ओरिएंटेड लॉ। सो हम लोग का एनवायरमेंट के साथ जुड़ा रहना चाहिए फॉर एवरी टाइम, फॉर ईच एंड एवरी टाइम हम लोग को ये चीज करना चाहिए। एंड फॉर टुडे, जो आज ये चीज, ये जो सुनेगा कोई भी हो, उसको मैं एक ही चीज बोलना चाहता हूँ कि आज पूरा लाइट रहे, साउंड और धुआं मत रहे, दैट इज इम्पोर्टेंट। Wonderful, wonderful, sir. I really like the last message. And of course, everything from the start that you've been sharing. Today, it is only light, spread the light of love, peace, and joy, not sound, not smoke. Sir said about the environment, about pets, about senior citizens, how to save nature, environment, how everything. You know, everything was put up very nicely in a nutshell. Very nice, sir. Bahut khoob, very nice. So I feel that even you're an environmentalist, where you're concentrating on the environment, on the cyber laws, on safety, awareness, very good. Not only human beings, even pets. And you also quoted one of the senior, I think, member of the parliament, I guess, or maybe one senior member. She's a female, you said. She said, you shared her, quotation or something, that birds will sing, but they don't expect anybody to listen. Flowers will bloom and they don't expect anybody to admire them. It's only human beings who have expectation. Yes, beautiful, sir. And hats off to you for, sharing all of that. Both badhiya, very nice. Dear sir,
The next question is, we come back to your school and college level. When you were in school and college, were you interested in sports and games? Yeah, obviously. Football and cricket. Football and I was preferring I always prefer outdoor games. So outdoor games हमको बहुत अच्छा लगता है. फुटबॉल क्रिकेट तो बहुत खेले हैं, बहुत मतलब इवन फॉर दी स्कूल टीम्स एंड क्लास टीम्स एवरी टाइम फुटबॉल और क्रिकेट तो चलता ही रहता है. जी जी. अभी जो फिलहाल वर्ल्ड कप चल रही है, तो आपका फेवरेट टीम कौन सा है भारत के अलावा? ऑब्वियसली इंडिया एंड एक्सक्लूड इंडिया ना, इंडिया तो रहेगी. Afghanistan played a like nice. I mean, they have developed a lot. यस, So आई एग्री. अफगानिस्तान का टीम हमको बहुत अच्छा लगा. मतलब कोई जो अच्छा करेगा तो अच्छा ही है. So अफगानिस्तान का टीम बहुत अच्छा है. Though it has been excluded from the list, but still बहुत अच्छा खेला. जी सर. जी सर, आप अभी ये फील्ड में हैं, अभी साइबर लॉ, साइबर क्राइम, टेकिंग केयर ऑफ द एनवायरनमेंट, बीइंग अ गाइड, अ मेंटर, अ साइबर लॉयर, doing all of this and having your own specialized, uh, uh, what you say, institute where you focus as the cyber group guru there, giving out trainings, educating people, creating awareness. Do you ever think of retiring? कभी रिटायर होने का कभी सोचे है मन में कि हाँ, इस उम्र में मैं रिटायर हो जाऊंगा और बैठूंगा, बस आराम ही आराम करेंगे हम, ऐसा कुछ है सर? मैं ऐसा लाइफ लीड करता हूँ कि आई एम ऑलवेज रिटायर्ड. क्योंकि हाँ, stress, if I work for something and if I don't take stress, then I'm a retired person. बट एक चीज सही है, बट हम लोगों का प्रोफेशन में रिटायरमेंट तो होता नहीं है मैम. तो हम लोग जितना दिन हम लोगों का जीवन चलेगा उतना दिन हम लोगों को काम करना पड़ेगा. आई एम ओके विद दैट. एंड इफ एट ऑल आई एम रिटायर्ड, but I will prefer to say that even if I get retired, I will never be tired. So काम चलता रहेगा, sensitization चलता रहेगा until and unless the last person of this country gets sensitized on cybersecurity. ये काम जारी रहेगा. Very nice. And hats off to you for this answer. You said, I will retire, but I will not be tired of sensitizing, creating awareness. And I would love to help every single individual to be safe online. That's really nice and beautiful. And if you love your job, there's no word called as retirement. That वो भी आपने बोला, आपने बोले थे, you just shared that. That's really nice. Like every day is retirement. If you love your job, you will do it happily, and you feel like you're not on the job, you're enjoying your life. Correct. Super. Very nice. You have a nice way of sharing it. Humor भी है, हकीकत भी है, और सच्चाई भी उसमें है. सब, there's a mix of everything when you're sharing all of that. So wonderful. Dear sir, we'd like to know what is the difference between smart work and hard work. So you're dealing with cyber laws, you're dealing with the court, you're training others and all of this. So you might be using some smart techniques apart from hard work. So let us understand the difference between smart work and hard work. इसका अंतर बता सकते हैं sir? When it is smart work, then that means you know the subject. So if you it's the only way when you work smart, that means you know the core of the subject. Otherwise आपको hard work करना पड़ेगा. तो it is a process कि पहले hard work करो, know about the subject, and then you can come to a smarter work. But for every smart work, it is very hard. Smart work भी बहुत hard होता है, क्योंकि smart work के लिए भी you have to be working day in and day out on the subject. बहुत कुछ, because we should always be. अभी students में एक चीज हम लोग देख रहे हैं कि if they know this much, they find we know everything. हम लोग शायद इतना कुछ सीखे हैं, शायद स्टूडेंट्स लोग इतना सीखे, हम लोग इतना सीखे हैं, बट we should always be in a learning mode. हम लोगों को ये लर्निंग मोड में रहना बहुत जरूरी है. ये आज मैं आपके साथ लाइव कर रहा हूं, इट मीन्स आई एम ऑल्सो लर्निंग फ्रॉम यू.
कि लाइफ कैसे करना होता है, एक आंसर देने की बाद उसको कैसे अप्रिशिएट किया जाता है, दिस इज ऑल्सो अ वे वन शुड लर्न. दिस इज नॉट एवरीबडीज जॉब. तो somebody, कोई भी टाइम when I talk with someone, when I even talk with my clients, I learn from them. हम क्लास में क्या बोलते हैं, आई एम नॉट हियर टू टीच यू. हम टीचर है ही नहीं, हम कुछ जानते ही नहीं है, तो टीचर कैसे हो सकते हैं. हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन शेयर नॉलेज. आप कुछ बोलो, हम कुछ बोलेंगे, हम लोग दोनों एनरिच्ड हो जाएंगे. सो वी आर ऑलवेज, वी शुड ऑलवेज बी देयर टू शेयर नॉलेज. हम लोग को ऑलवेज लर्निंग मोड में रहना जरूरी है. क्योंकि ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज वेन एवर आई गो फॉर टीचिंग स्टूडेंट्स फॉर साइबर सिक्योरिटी, अभी तो बच्चे लोग बहुत होनहार होते हैं साइबर के ये में फील्ड में, एंड दे कैन ऑपरेट द मोबाइल्स एंड कंप्यूटर्स वेरी फास्ट, एंड दे आर वेरी नेट savvy, दे आर वेरी टेक savvy. और ये लोग समझते हैं कि हम लोग सब जानते हैं, एंड दैट इज द वेरी वल्नरेबल पॉइंट, वेरी वल्नरेबल सिचुएशन. कि आप एक बार समझ लो कि हम सब जानते हैं, then you are the stupidest person in the world. So हम लोग सभी को एक लर्निंग मोड में रहना चाहिए कि हम लोग जो भी मिलता है भाई सीख लो, जहां से जो मिलेगा सीख लो. तो इवन फ्रॉम द किड वी कैन लर्न कि भाई चॉकलेट नहीं मिलने से किस पॉइंट ऑफ टाइम में रोना शुरू करना है, दिस इज ऑल्सो अ मैटर ऑफ लर्निंग. तो हम लोग को किड का जो साइकोलॉजी है उससे भी सीखना चाहिए. किस टाइम मिलने से चुप हो जाना चाहिए, दैट इज ऑल्सो लर्निंग. So from everywhere we should learn, and nature is the best. नेचर तो हम लोगों का सबसे अच्छा टीचर है. Just go on observing nature. कौन क्या कर रहा है, पत्ता क्या कर रहा है, पेड़ क्या कर रहा है, कैसे क्या कर रहा है, कोई एक छोटा पतंग है वो क्या कर रहा है, कुछ just go on learn, go on observing, you will learn a lot. So this is very important. Yes. Thank you so much, sir, for that wonderful answer. You said teach, instead of teaching, you say let us share knowledge. आप शेयर कीजिए, हम भी शेयर करेंगे थोड़ा. You said पत्ते से भी सीख सकते हैं, पतंग से भी सीख सकते हैं, छोटे बच्चे से भी सीख सकते हैं. It's really very nice. A beautiful way. And you said smart work is something where, once you have that whole, span of knowledge, or that whole. If you've got a holistic Yes. idea about a subject, then you can do a smart work. Otherwise, you cannot do a smart work. Yes. When you have a grip over that subject, like, then you become a smart worker. Otherwise, it's hard work. Otherwise, hard work हो जाएगा. Yes. Very brilliantly put in. आपके पास है ना बहुत सारा वर्ल्डली विजडम है सर. आई गेस यूर अ ग्रेट ऑब्जर्वर भी. आप बस सिखाते भी नहीं है, सीखते भी नहीं है, आप अच्छा ऑब्जर्व भी करते हैं लोगों को और इस धरती को. यू जस्ट ऑब्जर्व थिंग्स वेरी वेल एंड कैच अप. दैट्स रियली वेरी नाइस. वो भी एक कला है, सभी के पास नहीं रहता. वी डोंट हैव दैट. तो चल रहे तो पत्ते गिरे तो वी डोंट केयर, पतंग है ऊपर भी हम अपने दुनिया में खो चुके हैं. तो इट्स गुड टू बी ऑब्जर्वर्स. दैट्स वेरी नाइस. How many people, I don't know, how many people just look towards the sky and watch the cloud? यस. हम लोग ऊपर में देखते नहीं है, हम लोग नीचे देखते हैं, सीधा देखते हैं. हम लोग ऊपर में देखते नहीं है क्या चल रहा है स्काई में. स्काई में देख के हम लोगों का जो ये है क्लाउड्स है, उसका शेप्स भी अलग अलग होता है. कभी कभी हम लोग देखते हैं ना, कोई दूसरा शेप ले लिया, 5 मिनट में कोई दूसरा शेप ले लिया. Those are also very interesting issues. Yes, sir. Yes, sir. Dear sir, do you have any dream projects for the future? Is there something you'd like to share with us? You want to tell our audience that yes, this is a dream project and how to go about it? Uh, I was planning for a film or a kind of a short film on cyber security, जो सभी के लिए होगा, मतलब covering all the subjects उसके ऊपर. And right now that is my dream project. I don't know how to achieve, but सोच लिया मतलब तो करना ही पड़ेगा और करूंगा भी. तो let us see कैसे हो सकता है ये. Once it is done, I think it will sensitize people a lot.
एक धक्के में बहुत कुछ हो जाएगा। जी सर, यही हम पूछने वाले थे कि भाई फिल्म्स जब डिस्कस कर रहे थे हम सर, तो हु आर द डायरेक्टर्स, हु आर द प्रोड्यूसर्स, हु आर दोज इंडिविजुअल्स हु आर गोइंग टू फोकस ऑन क्रिएटिंग अ मूवी वेयर दे आर गोइंग टू शो हाउ टू स्टे सेफ, व्हाट इज साइबर क्राइम एंड व्हाट आर द साइबर ये इश्यूज। ये अभी तक सोचा नहीं है। आई हैव जस्ट प्रिपेयर्ड द स्टोरी एंड स्टोरी लाइन एंड ऑल। सो हम लोग का स्टोरी लाइन रेडी हो गया, स्क्रिप्टिंग रेडी हो गया, बट अदरवाइज आई हैव नॉट थॉट अबाउट द टीम और द क्रू। बट क्या होगा देखा जाएगा बाद में। अभी फाइनेंस का भी मैटर है, वो भी देखना पड़ेगा। सब हो सो जाएगा सर, एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस बिकॉज योर प्रोजेक्ट इज अ लवली प्रोजेक्ट। यस, इट इज द ये नीड ऑफ द ये आवर। द नीड ऑफ द आवर। और ऐसा स्पेसिफिक इश्यूज लेके बहुत सारा फिल्म्स बने हैं, जी बट सर, ओवरऑल होलिस्टिक एक फिल्म कवरिंग एवरीवन ऑन एवरी सब्जेक्ट ऑन द साइबर सिक्योरिटी, ये थोड़ा थोड़ा लेके एक तो छोटा वाला फिल्म जो सब जगह दिखा सकते हैं हम लोग। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग पूरा एक एक इश्यूज लेके उसको बहुत ड्रामेटाइज कर देते हैं। तो ज्यादा ड्रामेटाइजेशन में नहीं जाके, इफ द इट्स अ डॉक्यूमेंट्री भी हो सकता है। आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू जस्ट गेटिंग द आउटपुट, बट इट्स अ थॉट ऑफ माइंड। ये चीज होना बहुत जरूरी है। और एक साइबर सिक्योरिटी मेला करना चाहता हूँ। एक इट्स अ फेयर, साइबर सिक्योरिटी फेयर, ऐसा कुछ एक हो सकता है। तो इवन इवन इट्स अ टीम वर्क, देन वी कैन वर्क। देखते हैं। I really like this, no? साइबर सिक्योरिटी मेला, इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगर मैं आंखें बंद करके सोचूं कि भाई साइबर सिक्योरिटी मेला, आई कैन सी सो मेनी पीपल कमिंग देयर एंड रशिंग एवरीवन कि भाई मुझे भी जाना है क्या इसमें, व्हाट इज इट फॉर मी, मुझको क्या मिलेगा यहाँ पर, क्या सीख मिलेगी, सो दैट पीपल विल फ्लॉक and get to know. So I hope that your dream projects, take off at a high speed and succeed in that. We are with you, sir, and we support you in all your endeavors. क्योंकि आपके इरादे हैं बहुत नेक हैं। You think for the society, अपने लिए नहीं, सब इसमें है, everyone. सब safe रहना है. The environment should be safe. The people should be safe. That's really nice. Then only I will be safe. Yes, how sweet. That's really nice. Wonderful, sir. Thank you so much. That's beautiful. Yes, sir. Now we'll come down to the senior citizens. जो senior citizens है आजकल, उन लोग बहुत स्कैम हो जा रहे हो, दे आर स्कैम्ड ऑनलाइन अ लॉट एवरी डे। इनफैक्ट हमारे फैमिली में खुद दो रिश्तेदार ऐसे हैं, एक वन वाज अ मेल मेंबर, वन अ फीमेल मेंबर, वन आंटी 72 years and a male person 63 years. They were scammed online on some dating app. उनके जो पार्टनर्स थे वो नहीं रहे, अभी उन लोग गुजर गए। तो जो भी सेविंग्स पूरे थे, दे हैव गिवन टू दोस पीपल ऑनलाइन एंड दे वर स्कैम्ड। बाद में घर में पता चला ऐसा सब, एंड देन it was a case and it's over now. लेकिन आज उनके पास कुछ पैसे नहीं है, they are dependent on their children. This is one case of online scamming. But the truth which I want to share today and ask the question here is, there are several people who haven't saved any money. इन लोग सेव करे और पैसे खो दिए, गलती कर दिए, हो गया अनजाने में। लेकिन जो ऐसे लोग हैं जो पूरा पैसे अपने बच्चों को पढ़ाई में डाल दिए, बच्चों का पढ़ाई में डाल दिए, घर परिवार में, अपने लिए कुछ भी नहीं बचाए, they have not had any savings. So sir, for these people, it's a lesson that they have to save for themselves. The question here is, what is your advice for the younger generation? Should they start saving for their future? कि भाई ऐसा Absolutely. वक्त ना आए। Yes sir. Yeah, saving is very important. And इसके लिए सेविंग्स के लिए आर्किटेक्ट्स होते हैं। सो जैसे बिल्डिंग के लिए आर्किटेक्ट्स होते हैं ना, तो सेविंग्स के लिए भी आर्किटेक्ट्स होते हैं। सो दे विल जस्ट गाइड यू हाउ टू सेव। तो ये सेविंग्स आर्किटेक्ट्स लोगों के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ योर अर्निंग। एंड उन लोगों से ही जस्ट सीखे हैं, कि उन लोगों से बात करते करते सीखे हैं कि what we should do if we earn 100 rupee, we should save at least 40 rupee, just वहां से हटा दो। Now from 60 rupees you just enjoy your life, fulfill your needs, whatever. So ये 40 रुपया जो हट गया, उसकी तरफ देखना भी नहीं है। और उसको नॉर्मल ऐसे लूज कैश या लूज तरीके से we should not put it। हम लोगों को जो करना चाहिए, that is a very it's a very क्या बोलते हैं, मतलब बहुत तगड़ा एक सिस्टम होना चाहिए, जो सिस्टम के साथ जुड़ के इसको एक प्लान्ड तरीके से हम लोगों को
इन्वेस्टमेंट के जरूरी है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. Beautiful, sir. That's बिकॉज nice. आज हम लोग सोच रहे हैं कि फॉर इन्वेस्टमेंट्स भी, जैसे हम लोग बोलते हैं कि आज इतना रखो, 10 साल बाद इतना मिलेगा. तो 10 साल बाद जो अमाउंट मिलेगा वो अमाउंट सुनने में आज बहुत अच्छा लग रहा है, बट 10 साल बाद वो अमाउंट आज का अमाउंट की तरह होगा. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ फारसाइटेडनेस. दिस फारसाइटेडनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये अमाउंट 10 साल बाद का वैल्यू कितना रहेगा. द वैल्यूएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट रादर देन द अमाउंट. Sir, superb, sir. हमने कभी ऐसा सोचा ही नहीं जो आप अभी हमारे लिए बताएं. जस्ट 2-3 लाइंस व्हिच यू शेयर लास्ट. यू शुड, यू आर थिंकिंग फ्रॉम हियर कि भाई 10 साल के बाद में क्या मायने रखता है, इट्स छोटी रकम ही. तो इन्वेस्ट इन द राइट प्लेस, सही जगह पर इन्वेस्ट कीजिए. सही जगह पे रखते हैं, हाँ, so that you can sustain on that. बिकॉज हम लोगों का ये सस्टेनेबिलिटी फैक्टर हम लोग को बहुत कुछ सिखाया है कोविड पीरियड में, हाउ टू सस्टेन. तो कोविड पीरियड में हम लोग बहुत कुछ सीखे. हम लोगों का तो प्रोफेशन ऐसा है कि नोबडी गोज गिव्स अस सैलरी. तो हम लोगों का जो खुद का है उसी से भी चलाना पड़ा. 1.5 साल कोड बंद था. तो फॉर 1.5 year द इफ योर वर्क प्लेस इज क्लोज फॉर 1.5 year, so it's very difficult to just sustain your entire setup. और मैंने for the entire 1.5 year I have not curtailed anybody's salary, even a single pice. क्योंकि वो लोग सारा साल हम लोग को देखा, सारा साल देर हम लोग एक साथ जुड़े रहे, एक साथ काम करें. एंड इन दैट हार्ड सिचुएशन इफ आई डोंट सी देम देन हु विल सी देम. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग सस्टेन करने के लायक एक कुछ रहना चाहिए कि चलो भाई. एंड देयर शुड, और एक चीज हम बोलना चाह रहे कि सपोज यू आर इन अ प्रोफेशन, हो सकता है कि प्रोफेशन में कोई अप्स एंड डाउन्स हो सके, तो यू शुड हैव अ प्लान बी. दूसरा एक प्लान बी होना चाहिए. एंड इवन फॉर अ प्लान बी देयर शुड बी अ प्लान सी. सो एट लीस्ट 3 of your professions should be in a right way. सो कोई एक लूज करेगा तो दूसरा और तीसरा, या कोई 2 लूज करेगा तो तीसरा आपको सरवाइव करवाएगा. एंड दैट टू इन अ डिफरेंट फील्ड्स, मतलब दैट टू इन अ डिफरेंट डायरेक्शंस, मतलब ऑल शुड बी इन अदर पर्सपेक्टिव्स. तो इससे क्या होता है, इससे यू विल हैव अ ग्रेटर सस्टेनेबिलिटी फैक्टर. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जी सर, जी सर. Thank you, sir, for sharing all of that so nicely. That's really very nice. Thank you so much. Lots of intellect, lots of wisdom, and lots of experience you're sharing. Good observing skills you have, which we will learn today. Lots of takeaways. Dear sir, do you have any best friends who you'd like to mention today? कि भाई ये सब हमारे best friends हैं, हमारे साथ अब तक हैं. Would you like to share this or skip the question? मेरा तो बेस्ट फ्रेंड्स बहुत है. एंड नाम बोल दीजिए. नहीं नहीं, मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि मेरे साथ किसी का झगड़ा होता ही नहीं है. सो दैट इज द मेन प्रॉब्लम कि मैं कभी कभी किसी को बोलते तो भाई मेरे साथ तो 2-4 दिन तो झगड़ा कर ही सकते हो, आई फील बोर. तो सब लोगों के साथ अच्छा रिलेशन रखना ये भी सब बोर्डम है. एक्चुअली एवरीबॉडी इज बेस्ट फ्रेंड. That's really nice, sir. मुझे अच्छा लग रहा है ये बात सुन के, लेकिन मुझ में ऐसा नहीं है. एक चांस, 2 चांस, 3 चांस, 4, 5, 10 बार भी दे सकती हूँ. उसके अलावा आई एम ऑफ, आई विल कट ऑफ. बट यूर नाइस कि भाई मेरे कोई एनिमीज नहीं है, सभी मेरे दोस्त हैं. दैट्स रियली वेरी नाइस. वैसा हम लोग भी सीखना है, मुझे सीखना है. ऑल माय एनिमीज, आई डोंट नो हु आर माय एनिमीज, क्योंकि ये हमको समझा ना, मतलब हमको जानता नहीं हूँ मैं कौन मेरा एनिमी है. if they are also my enemies, I am also friendly with them. I don't know वो लोग खुद का दिमाग में मेरे लिए कोई एनमिटी रखता है कि नहीं, या आई डोंट नो. बट मैं उसके लिए कोई, मतलब आई डोंट इवन केयर. चलो लेट्स, हम लोग जुड़े रहते हैं. अब किसी का एनमिटी रहेगा तो ये उसका प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम नहीं. जी जी जी. वेरी नाइस. You know, you're just like very compassionate, understanding, and very cool person. कि भाई उनका प्रॉब्लम है, हमारे नहीं. मैं तो अच्छा ही हूँ, अच्छा ही रहूंगा.
Yeah, I don't change for anybody. मेरा मेरा मम्मी एकदम when I was a kid, तो तब से जब when I was going for एग्जाम कि मेरा एग्जाम आ गया, तो तब भी मैं पढ़ता नहीं था, तो खेल कूद इधर उधर। और मेरा मम्मी कहते कि तुम्हारा एग्जाम है, तुम्हारा तुमको दिखने में नहीं आता है, देख के नहीं लगता है कि एग्जाम। तो किसी को देख के एग्जाम कैसे लग सकता है? तो आई विल वेरी टेंस्ड, किसी से बात नहीं कर रहा हूँ, खाना नहीं खा रहा हूँ, खेल नहीं रहा हूँ, मतलब इज इट एन एग्जैक्टली एन एग्जाम सिचुएशन? आई डोंट नो, बट कूल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे क्लाइंट्स भी बोलते हैं कि सर आप इतना हार्ड सिचुएशन में कैसे कूल रहते हो? तो सीख जाओ, इट्स वेरी इजी। Thank you so much, sir, for sharing. That's really very nice. Dear sir, when do you smile the most? When I don't smile, I smile the most. Wow. बोल दिए एक ही सेंटेंस में, when I don't smile, I smile the most. That is all the time. That's beautiful, wonderful. Any weakness for chocolate, sweets, ice creams, पानी पूरी या समोसा, ऐसे कुछ you have a weakness? वो देखते ही मुझे खाने का दिल बोले। पानी पूरी तो है ही, पानी पूरी। कितना तक खा सकते हैं आप? How I much? am not I am not a huge intaker of food, but हमको थोड़ा थोड़ा अच्छा चीज बहुत कुछ पसंद है, मतलब I eat less, but अच्छा चीज होगा तो खा लेंगे। एंड इवन मैं आई वाज देयर इन अ कॉन्फ्रेंस, मैं जगह का नाम नहीं बोलूंगा, आई वाज इन अ कॉन्फ्रेंस, देयर वाज अ खाना बहुत खराब था, सो आई एट इट इन अ वेरी हैप्पी वे, क्योंकि मैं यही सोचा कि मेरे लिए आज भगवान ने यही खाना तय किया, तो मैं उसको खुशी खुशी खा लिया। तो मेरा जो और भी दोस्त था, इनविटीज थी, तो वो सब बोले कि ये खाना तुम कैसे खा लिया? तो उन्होंने बोला भाई ये खाना है, सो इफ एवरीबडी कैन ईट, व्हाई नॉट मी? बट आचार वॉज देयर इन सेवियर, तो आचार हमको सेव किया, सो मैंने खा लिया। वट एवर आई एम एन ओमनिवोरस पर्सन, मैं कुछ भी आई ईट वॉट एवर इज एडिबल, सो मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, खाने के लिए मेरा कोई प्रॉब्लम, सो ओके विद एवरीथिंग। Yes, sir. Sir, how many pani puris maximum you have eaten? Around 50. 15 or 50? No, 50. 50. Oh, that's great. That's nice. Because I wanted to have a competition with you. Maybe I crossed 30. At a single time, I crossed 30. I might have eaten, but not like that. Okay, fine. So you win and I lose. Okay, that's nice. Sir, आपको इतनी सारी ताकत कहाँ से मिलती है? आप, हमेशा smiling, take it easy, everything will be settled. हो सकती है. All positivity. Yeah, I am there. अगर ऐसा है, earlier भी mention करे थे आप कि भाई be solution focused, not Yeah. dealing on the problem. तो आपको इतना शक्ति कहाँ से मिलता है ये सब करने के लिए, इतना कुछ सोचने के लिए, इतने अच्छे इरादे हैं, तो ये सब स्ट्रेंथ कहाँ से मिलती है आपको? कभी सोचे नहीं ये बारे में कि हमको ये कहाँ से मिलता है, बट मिल जाता है कहीं से भी, मे बी फॉर द ग्रेस ऑफ गॉड, ये हो सकता है, सभी का दुआ है, हो सकता है। That's और right. ये चीज मैं कभी नहीं, वी ऑलवेज गो टू द टेम्पल एंड से मेरा ये कर दो, मेरा वो कर दो, मेरा अच्छा ही कर दो, मेरा फैमिली का ये कर दो, बट इवन इफ आई गो टू एनी टेम्पल, आई कैन नेवर आस्क फॉर माई सेल्फ। पता नहीं क्यों, आई नेवर आस्क फॉर माई सेल्फ, मतलब आता ही नहीं मेरे लिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि सभी को अच्छा रखो, और हम लोग के आसपास जो है, जो नदी है उसको सूखने मत दो, पहाड़ जो है उसको तोड़ने मत दो, और सभी को, मतलब दुनिया में जो कोई भी है उसको अच्छा रखो। और इसमें एक सुविधा है, क्योंकि सभी के अंदर मैं भी इंक्लूडेड हूँ, तो फिर मेरे लिए भी हो गया काम। सो दैट इज वेरी, सभी के लिए मांग लो, तो मैं भी ब्रैकेट में आ गया ना। Perfect, perfect. बहुत बढ़िया. I love that because I do that. Even I Yeah, don't write that is like that I is good. resonate with you. I Yeah, resonate with that's you on important. this. That's important.
कि भाई नॉट सेल्फिश फॉर माई सेल्फ, सभी उसको इंक्लूड, सब को इंक्लूड करे, तो हम भी उसमें है, वी आर इन दैट. Everybody is included. Very nice. And my dear friends, all of you out there, apart from praying for yourself, सबके लिए दुआ मांगिए कि वे सब अच्छे रहें, कि वे आप भी उसमें हो, दूसरे भी शामिल हो, तभी आपका जो मनोकामना है पूरी हो जाएगी, and God will bless you in a number of ways. Yes, sir. That's really very nice. Dear sir, is there anything that scares you? डर लगता है कभी कभी किसी चीज का? अगर हाँ, किस बात का डर है आपको? मैं जितना आदमी को ट्रेन किया हूँ, वो किसी भी टाइम साइबर क्राइम. You're on mute, sir. Yeah. We'll just get back, dear friends. Yes, sir. Will we just be back? Yes, sir. Yes. तो मैं जो क्लाइंट्स को, मतलब नॉट क्लाइंट्स, जिसको भी मैं सिखाता हूँ साइबर क्राइम के बारे में बोलता हूँ, वो कभी साइबर क्राइम के अंदर ना पड़ जाए, ये मेरे लिए बहुत स्कैरी है. मतलब आई ऑलवेज थिंक अबाउट इट. एंड इसके लिए मैं और एक चीज करना चाहता हूँ कि जिसको मैं ऑलरेडी सिखा दिया, उसको फिर से एक सेशंस में लेके आना चाहता हूँ. तो फिर उनका एक जस्ट वो टोटल चीज एक बार रेजोनेट हो जाए अंदर में, कि एक साथ पूरा चीज एकदम होलिस्टिक आइडिया में. और एक बार मतलब रिकैपिचुलेशन जिसको बोलते हैं ना, जैसे काइंड ऑफ रिकैपिचुलेटिंग सेशंस. जी सर. तो इसके लिए बोलता हूँ. और सभी के पास जो टाइम होता है, ये भी नहीं, टाइम कम होता है, तो सब लोग सोचते भी नहीं है वैसा. चलिए, दिस इज हम लोग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है रिगार्डिंग साइबर क्राइम, कि हम लोग इसका नेसेसिटी अब लोग नहीं सोच रहे. वी आर नॉट इवन कंसर्न्ड अबाउट द नेसेसिटी अभी तक. किसको पता चल रहा है? जो अफेक्टेड हो रहा है उसको पता चल रहा है. मतलब जो अभी तक अफेक्टेड नहीं हुआ, वो इसका नेसेसिटी को समझ में नहीं पा रहा है. सो दिस स्केयर्स मी अ लॉट, क्योंकि माय ड्रीम इज टू ट्रेन एवरीवन. सो एवरीबडी शुड बी सेंसिटाइज्ड अबाउट व्हाट्स गोइंग ऑन अराउंड अस. ये चीज हम लोगों को बहुत सेंसिटाइज होना जरूरी है. जी सर, जी सर. वेरी नाइस. थैंक यू फॉर शेयरिंग सो मच सर. डियर सर, आपको कभी गुस्सा आता है? अगर आता है तो कब? भूल गया लास्ट कब आया. यस सर. हाँ ठीक है, गुस्सा आता है. तो दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट. उसको भी ना बहुत अच्छे से हम लोग हैंडल कर सकते हैं. मान लीजिए कि आपके ऊपर मेरा गुस्सा आया, तो मैं क्या करूंगा? आई विल जस्ट स्टॉप टॉकिंग टू यू. मैं उसी टाइम कुछ कुछ मत बोलूंगा, बिकॉज उसी टाइम हम लोग कुछ बोल देते, दैट बिकम्स बैड. टेक टाइम, टेक टाइम फॉर योर सेल्फ. टेक डीप ब्रीथ. उसको थोड़ा ठंडा होने दो. उसके बाद जो पॉइंट है वो पॉइंट वाइज बोलना जरूरी है. ये आप ये चीज गलत करें, आप ये चीज सुधार लो, सब सही हो जाएगा. बट उसी टाइम, गुस्से के टाइम हम लोग जो कुछ भी बोलेंगे, दैट विल बी बैड फॉर द रिलेशन. तो Yes. इट इज इम्पोर्टेंट. उसे पॉसिबल होगा तो उसे चले जाओ, वहां से हट जाओ, दूर चले जाओ, बट डोंट टॉक. Yes. That's really nice, sir. Thank you for sharing that. So, would you like to give a suggestion for all of us out here? सभी के लिए, सभी उम्र वाले के लिए. Any nice suggestion for all of us? सजेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ जनरल सजेशन, जो भी आपके मन में कि भाई ऐसा जीनी है, या ऑनलाइन सजेशन टू स्टे सेफ ऑनलाइन और ऑफलाइन, एनीथिंग. ओके. ऑनलाइन सजेशंस के लिए मैं दो तीन तो चीज बोलना चाहूंगा, कि हम लोगों को हम लोगों का कुछ बेसिक साइकोलॉजीज है, जो साइकोलॉजी को लेके ये जो साइबर फ्रॉड्स लोग हैं जो खेलते हैं, ये साइकोलॉजी है हम लोगों का. पहले डर, और फियर फैक्टर. हम लोग को कोई भी एक मैसेज आया, कॉल आया, हम लोग को डरा डरा धमका दिया, हम लोग डर गए. सो दिस फियर फैक्टर इज टू बी हैंडल्ड इन अ प्रॉपर वे. दिस इज नंबर वन. नंबर टू इज हम लोग का एक दूसरा तरीका है, दूसरा नहीं, वही सबसे अच्छा बड़ा तरीका है जिसके लिए हम लोग का साइबर फ्रॉड हो रहा है, वो है हम लोग का ग्रीड फैक्टर. और ये ग्रीड भी होता है बहुत सारा तरीके का. ये ग्रीड होता है फॉर मनी,
पैसे का ग्रीड होता है, अच्छे लिपस्टिक नेल पॉलिश का भी ग्रीड हो सकता है, मतलब एक प्रोडक्ट का ग्रीड हो सकता है, एक सर्विसेज का ग्रीड हो सकता है। और ये सर्विसेज के अंदर बहुत कुछ सर्विसेज आता है, ये बहुत बहुत कुछ सर्विसेज, ये सर्विसेज के सर्विस का ग्रीड होता है, सेक्सुअलिटी का ग्रीड होता है, ये एक होता है, फ्रेंडशिप का, सेक्सुअलिटी का, रिलेशनशिप का, ये ग्रीड होता है। तो ये हम लोग का बहुत सारा ग्रीड फैक्टर्स है। ये ग्रीड फैक्टर्स whenever we will be online, we have to be very cautious about these greed factors. हम लोग ये ग्रीड फैक्टर को एक बार हैंडल कर लेंगे, जिसको आई एम जस्ट वर्किंग ऑन दिस सब्जेक्ट, जिसको बोलते हैं साइबर साइकोलॉजी। दिस इज अ वेरी इमर्जिंग एंड इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट वी शुड वर्क ऑन। कि साइबर साइकोलॉजी क्या है? दिस साइकोलॉजी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स और टू एस्पेक्ट्स, one from the perspective of the victim and one from the perspective of the fraudster. फ्रॉडस्टर हम लोग के बारे में क्या सोचते हैं, या हम लोग फ्रॉडस्टर्स को क्या सोचने के लिए मजबूर करते हैं हम लोगों का एक्टिविटी के ऊपर। if we just go on sharing everything, every personal details in our social media handles, और सारा इंफॉर्मेशन उन लोगों को दे दूंगा, और फिर उसी इंफॉर्मेशन के ऊपर हम लोग का एक फ्रॉड हो जाएगा, तो फिर ये फ्रॉडस्टर का प्रॉब्लम कम और हम लोग का प्रॉब्लम ज्यादा है। ये हम लोग को सोचना चाहिए। तो फिर वी हैव टू बी वेरी मच कॉशियस कि हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग क्या शेयर कर रहे हैं, व्हाट वी आर गिविंग टू दी इंटरनेट दुनिया। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यही हम लोग का सीख है कि हम लोग का अपलोड करना क्या है। हमने गाड़ी खरीदा, वो गाड़ी का नेम प्लेट, नंबर प्लेट देके हम लोग अपलोड कर दिया फोटो, फर्स्ट फोटो। ये मेरे पास किसी का गाड़ी का नंबर प्लेट रहेगा तो मैं उसके ऊपर एक 4 पेज का एक ऐसे लिख सकता हूँ, इतना डेटा आ सकता है उसका बारे में। तो हम लोगों को सोचना चाहिए, मेरा किड स्कूल जा रही है या किसी का किड फर्स्ट स्कूल जा रहा है, तो उसका फोटो विथ टैग्स, स्कूल का नाम, बैच, ये सब देके हम लोग दे रहे हैं। अब इसके तो कोई फॉलो भी कर सकता है, दूसरा क्राइम भी हो सकता है, नॉट ओनली साइबर क्राइम, कोई दूसरा वाला क्राइम भी हो सकता है। तो फिर वी हैव टू बी कॉशियस कि हम लोग सोशल मीडिया में क्या शेयर कर रहे हैं। हम लोग को ये शेयरिंग हम लोग पहले सीखे थे, शेयरिंग इज केयरिंग। तो शेयरिंग इज केयरिंग बाकी सब के लिए ठीक है, बट नॉट फॉर सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में शेयरिंग बहुत हम लोग को सोच समझ के करना जरूरी है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो एजेड है वो सभी के लिए बोलूंगा कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो जो आपके आसपास है उससे समझ लो। डोंट डू ऑफ एनीथिंग ऑफ योरसेल्फ। जो भी चीज सोशल मीडिया में, जो भी चीज पैसा ओरिएंटेड होगा, मनी ओरिएंटेड होगा, उसको हम लोगों को ज्यादा से नजर करना चाहिए। मतलब ऐसे नॉर्मल कॉन्वर्सेशन इज गुड, कोई भी टाइम उसमें कोई फाइनेंशियल टर्म्स आ गया देन तुरंत पैसा मत देना। और अभी एआई वाला प्रॉब्लम आ रहा है, किसी का वॉइस लेके, किसी का फोटो लेके, किसी का वीडियो लेके, एआई से डीप फेक बना के किसी का, हो सकता है कि कल मेरा वीडियो लेके कुछ हो जाए। ऑलवेज गो फॉर अ क्रॉस चेक, बिलीव मत करो। मतलब डोंट बिलीव एनीथिंग एंड एनीबडी इन इंटरनेट दुनिया, स्पेशली व्हेन इट इज रिलेटिंग टू मनी और एनी डेटा, कि हमको ये डेटा चाहिए या ये पैसा चाहिए। सो वी हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट टू थिंग्स, डेटा एंड मनी। ये दो हम लोग का समझ में आ जाएगा तो वी आर एटलीस्ट 90% सेफ फ्रॉम साइबर क्राइम्स। सो दिस इज इन अ ब्रॉड वे, वी कैन जस्ट पुट इट इन दिस वे। अदरवाइज ये तो आपका 7 दिन वाला सेशन लगेगा ये जी साइबर जी। क्राइम समझाने के लिए। Yes, sir. I get that, sir. That's really very nice. Dear friends, we are really very thankful with sir sharing all of this. I guess sir is a hidden gem
कि भाई और सारा बहुत कुछ है आप में कि भाई आप शेयर कर सकते हैं. We have a lot of important information to be tapped out from sir. Friends, we'll have a short break and we'll be back again with sir. We'll just take a 10-minute break and be back again. Thanks for staying with us and thanks for being a great, audience where you would love to learn from the common man, from common celebrities who are here with us. And today, he is above common. He has that intellect who's going to help you to stay safe and to stay alert. Thanks and stay tuned. Yes, friends. We'll be back again in just 10 minutes.